नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव, जय श्री राम. So today we will be joined on the stream by the men who coined the term when the going get through tough and the tough gets going. Sorry. Without wasting much time, let me invite the Marcus King, Maker's King, the professor. I'm really sorry, guys, that you have to wait for really long because I was stuck in the traffic. Just reach home, and straight I'm on my mobile. So I hope you all are doing well. So we got Professor G here. Hello, Professor. How are you? Hello, Simran Ji. I'm good, and let me start by saying this that You are on mute, Professor. मेरी voice नहीं आ रही? Am I audible? Guys, can somebody tell me if I'm audible? I not. Okay, I'm not able to hear you, Professor. 1 minute. Can you say now? Can you speak now? hello, Simran Ji. Can you hear me? Yeah, I can hear you now. Hello, Professor. कैसे हैं आप? I'm absolutely fine. Let me start by saying this that warm regards to all the beautiful people out there who are listening and who are part of this wonderful movement and roaring their voice day and night for justice for Sushant Singh Rajput. I feel like I'm blessed to be among these beautiful souls, and it's an honor and a privilege. And at the same time, I would like to thank Memeaa Salgaonkar, who gave me this platform to speak. So thank you. Good evening to everyone. Thank you, Professor. Thank you so much. So, Professor Ji, as you know, कि आज एक candid, talk होगा, and we would love to hear from you. What was that connection that got you connected to this movement? In this SSR movement. Absolutely, Simran ji. Uh, Before I, talk about this, जो saying आप कह रहे थे that goes by what I believe in my real life as well, that when going gets tough, only the tough gets going. मुश्किल वक्त में खड़ा होना, लड़ना और डटे रहना, यही योद्धा कहलाता है. So on that note, let me start by saying this: how I got into this movement, how I came to know that a movement of this magnitude started, and everybody is on the same wavelength as me. So I still remember the time on 14th June 2020. Afternoon time, somewhere around 2:30, I heard this, tragic news on television that Sushant committed suicide. And you won't believe, Simranji, that just a day before, and in fact, a few days before that as well, I was watching Dhoni and I was watching Chichore. And me, along with my friends and my cousins, and we were just, admiring the quality of work that Sushant did in these movies. And we were like, yeah, this guy is so young and he's so talented, man. I mean, this guy is going to rule Bollywood one day. And we were discussing that how Shah Rukh Khan started his journey and where he is now, and then comparing it with Sushant Singh Rajput, and I said that this guy has the skills. And seeing his performance in the movies, we were like, yeah, this guy is tomorrow's superstar, the greatest star that Bollywood is going to see. Well, he almost accomplished that with his movies, with his acting skills. So when this tragic news came, it was very, very hard for me to digest. And I was like, how can this be possible? I mean, I wanted to know the reason, because the entire nation was thinking that he took his own life. So I was like, what is the reason behind it? I want to know. So for 1 or 2 days, I kept,
scrolling news articles and watching news. Somewhere I come to know ke bhai kya hua kya aisa that he has to take his own life. Very interestingly, after a few days, I came across certain articles which stated that about his state of mind, and I was like, how is it possible? How is it possible that the entire Bollywood is stating a wrong narrative, which we say today, but that time I was quite shocked. I'm talking about depression and bipolar. So I started searching for articles before 14th June 2020, and I could not find any. No gossip, nothing, absolutely zero on this boy. And I was like, so this is a target assassination on someone who is not alive to defend himself. It was quite clear. And then I did some more research into Sushant Singh Rajput. I went through his life, the entire life, how he, started his journey from school, and how he lost his mother at a very tender age while he was in school. And then, his sisters took care of him. And Sushant bolta bhi hai Priyanka ji ko apni mother figure. So I was like, reading about his journey, and I came across that this guy was brilliant, exceptional in his studies, and he was doing his engineering. And engineering करते करते इस लड़के ने क्या करा कि he started to dream and follow his dream. Now this is somewhere which I got stuck, because this is not an easy decision to make. He could have been a scientist with kind of knowledge he has. I mean, he was already doing very, very good, exceptional in his stream, engineering. So completely, moving from one stream to absolutely another, like a paradigm, right? Like a paradigm shift. That took me. That shook me actually. I was like, wow, man, this guy had the guts. This guy had it in him to follow his dreams. And then I started reading more. I became more inquisitive कि यार देखो तो सही आगे क्या हुआ इसके साथ. And as I went on reading, it this boy surprised me. He started his career as a common man, as a background dancer. He did his dramas as well, but he joined Shamak Davar, and then gradually he moved on to television, and he made a huge name. A huge name. घर घर में जैसे कहते हैं ना, घर घर में एक नाम कर दिया सुशांत ने, वैसे. So he made that huge name for himself in the drama, and he did not stop there. He did not just stop there. He just kept going, and he pursued his dreams. He went to Bollywood, and rest everybody knows. He started with his movies, and we all know the kind of superstar uh, I would say he is, because I always feel that he is present in within us even today. So his journey from being a commoner to the superstar, that's his legacy. If you ask me in clear words कि सुशांत की legacy क्या है, तो मैं कहूंगा कि यार उसकी जर्नी देखो यार. उसकी जर्नी इतनी प्यारी है, इतनी ब्यूटीफुल है. He had all the struggles, and he overcame all the obstructions in his life. You see, you need to understand one thing, that where is Sushant coming from? He's coming from a family background of people who are highly educated, you know, and taking that step, leaving engineering and pursuing his dreams. Now, at that time, सुशांत को नहीं पता था कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, but he took that chance and he was successful. So he was a believer, he was a dreamer, he was an achiever, according to me. So this is one part of it. And then gradually, Simranji, I came across
the movement. And I came across social media where I saw a couple of people started raising their voice. And then I saw the pictures of Sushant Singh Rajput, which were consciously leaked by one of the cops. Let me say this: this was a conscious effort for by some cop who leaked that video, who leaked that pictures. When I came across those pictures and the ligature mark, the first question I asked myself is, did anybody see the body hanging? Because I do not see. I only see the body on the bed. So, who exactly saw the body hanging? And I did my research and I found out it was just the flatmates. So, मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होती है. I did not have an answer, and I wanted to find that answer, that how did Mumbai police come up with a statement within a few minutes when they did not see the body hanging? And this question was killing me. And I was like, when nobody has seen the body hanging, it's just the flatmates. How can you rely on those people? It's that simple. Those flatmates should be arrested then and there, interrogated. That should be the first priority of Mumbai police. And then, of course, on the news, it was showing like the crime scene was not sealed at all. It was looking like a picnic spot. I mean, I still remember I was watching Arnav's live, and I was saying, यार ये गेट पे, you know, गेट के अंदर पुलिस वाले तो ठीक है, but what are these civilians doing inside? I mean, those mystery girls or the makeup artist, and who knows who were entering at that point. To be really honest, towards the start, I had no idea about this guy, Sandeep Singh. ये तो बाद में थोड़ा रिसर्च करके पता लगा कि संदीप सिंह कौन है और मिस्टीरियस गर्ल्स कौन है. To be honest, Yeah, Simran ji, I was initially I was just like I used to like Sushant Singh Rajput. I was never a fan of Sushant until I became one after yeah, reading his journey, his achievements and everything. So I'm going to talk about it in a later part of the show. So of course, of course. you can go on. Yeah. No, absolutely right, brother. Professor Z, when I heard the news, you won't believe, a day before, it was Saturday, right? Sunday, the news came out, and it was Saturday. Me and my family and my friends, we watched his movie Chichore. Yeah, yeah, probably. सिमरन जी, आपके यहाँ पर सैटरडे होगा, हमारे यहाँ पर संडे था. नहीं, मतलब न्यूज़ तो संडे को आया था ना. हम लोग का लाइक इट वाज अबाउट हाफ वन. आई वाज सेइंग अ डे बिफोर, संडे हमने उसकी मूवी देखी थी छिछोरे. एंड सडनली, लाइक यू सेड कि एकदम से ये न्यूज़ आती है, एंड इट्स सच अ बिग ट्रॉमा कि क्या हो रहा है. एकदम से आप समझ नहीं पाते हैं, आप बिल्कुल मतलब कुछ सोचता नहीं है कि ये क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ. कल ही तो हम देख रहे थे. सो आपने जैसे बात करी कि वहां पे माउंट ब्लैंक में ऐसा लग रहा था जैसे पिकनिक है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है. मेरा एक आपसे क्वेश्चन है. um, what about what's your I mean, what do you have to say about the two bodies and the ambulance goof up जो आप न्यूज़ में या जो भी हम सोशल मीडिया में सुनते आ रहे हैं, that there were two bodies. आपका क्या कहना है, आपका क्या बिलीव है इस बारे में? देखिए सिमरन जी, माय थॉट्स आर वेरी क्लियर. Look at the crime scene. Look at the video. Who's the person who came at Mount Blanc first? It हम्म, was the family, मीतू सिंह. मीतू सिंह जी सबसे पहले वहां पर पहुंची थी. उन्होंने जी, सुशांत की बॉडी देखी. ये लोग उसको दे वर ट्राइंग टू यू नो गेट होल्ड ऑफ द बॉडी, एंड मीतू जी ने उनको बोला कि बॉडी को ठीक तरह रखो. हम्म, उसके बाद पुलिस आई. उसके हम्म, बाद साथ साथ में मीडिया आई. नाउ माय पॉइंट इज, had there been any second body,
wouldn't the sister would have raised any alarm? Mm-hmm. It is Yeah, quite evident. It's quite evident. So अगर दो bodies होती, then the entire case would have been different. Now, absolutely. Now, for all those people, I also do not deny that there were certain people who had their question कि यार स्ट्रेचर में ध्यान से देखो, स्ट्रेचर में जो चादर है उसके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे दो बॉडीज है. Mm-hmm. ठीक है. उन लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ लॉजिकली. पहला पॉइंट मैंने समझा दिया कि Yeah. सिस्टर वाज प्रेजेंट देयर, सो सिस्टर नोज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन द क्राइम scene. She has seen Sushant's body closely, touched him, was traumatized, was shocked. This is one part. What people need to understand कि सुशांत की बॉडी जो है उस क्राइम रूम से बाहर कैसे आई और एम्बुलेंस तक कैसे पहुंची. Now this is बिल्कुल. very interesting. The thing is, these people took Sushant's body in a portable stretcher. Mm. पोर्टेबल स्ट्रेचर पे लेके जाएंगे. So obviously, if there were two bodies, sister was present throughout the time. She would have Exactly. seen that. Now, interesting thing also is that the sister Mituji had clicked various photographs, around 45, 50 photographs, which she has Mm. submitted to CBI. अगर वहां पर दूसरी बॉडी होती तो she would have taken those pictures as well. Yes. Yeah. So now the body is shifted from a portable stretcher towards down of the building. And as they reach down, then they shift the body to another stretcher, Mm-hmm. where उस स्ट्रेचर से फिर बॉडी लेके जाते हैं वो एम्बुलेंस में. नाउ योर इनिशियल क्वेश्चन वाज व्हाई वर देयर टू एम्बुलेंस. Yeah. इस सवाल का जवाब थोड़ा सा टेढ़ा है. Probably the official statement was that वो जो ट्रॉली है उसके व्हील्स जो थे वो खराब हो गए थे and that's why they had to call the second ambulance. Yeah. But my question here to Mumbai police is that आप अगर पोर्टेबल स्ट्रेचर से लेके आ रहे हो बॉडी नीचे तक, इतना आपने कष्ट करा है, तो उसी पोर्टेबल स्ट्रेचर से आप एम्बुलेंस तक भी जा सकते थे. बिल्कुल. ठीक है. जस्ट बिकॉज व्हील खराब है स्ट्रेचर का, व्हील वाले स्ट्रेचर का, does not I do not find it the right way to express कि भाई व्हील खराब था इसलिए एंटायर सेकंड एम्बुलेंस बुला ली. तो मेरा यहाँ सवाल ये है कि पहली एम्बुलेंस का अगर व्हील खराब था तो दूसरी एम्बुलेंस जो है उसको आने में टाइम तो लगता. बिल्कुल. Absolutely. So, what were you doing till that time? And how come the second ambulance was already there on a standby? Are you Mm-hmm. understanding my point? Yeah. So, and why am I saying this is we have seen uh, the ambulance guy, जो क्या नाम था उसका, this ambulance guy, I'm sorry, I'm forgetting his name. Um, anyway, Um. anyways, Yeah, so okay. Sorry, I don't know either. yeah, I had it written, but anyways, so the ambulance guy, attendant जो उसका था, वो पॉलिथीन बैग में कुछ लेके जा रहा था एंड Mm-hmm. भाग के लेके, and he was not going towards the ambulance which was inside. He was going, he went outside the gate and kept something in one of the ambulances which was parked outside. Now, this people need to know that दो एम्बुलेंस आई थी लेकिन एक थर्ड एम्बुलेंस थी which was parked outside the Mont Blanc where this guy goes and keeps that bag. अब what is in that bag, which is very interesting to know. Mm. संजय भांगर था उस एम्बुलेंस ड्राइवर का नाम. Uh-huh. If I Okay. remember, yeah, Sanjay Mm. Bangar, and his attendant name was I think RF or something of that sort. So, anyways, that attendant took that bag and kept it outside. Now, the question I have for Mumbai police is that under whose authority a civilian, now that's ambulance attendant is a civilian, how is he handling anything?
anything from the crime scene and taking it outside the crime scene. Yeah, yeah. My, this is my first observation. My second observation is that how is it that you are giving a statement based on whose authority that Sushant Singh Rajput is not alive, whereas you Mhm. have not even called a doctor on site who can confirm, who can officially state whether a person is dead or alive. That, yeah, absolutely. There's a big goof of प्रोफेसर लाइक बहुत सी चीजें हैं जो ठीक से हैंडल नहीं करी हैं प्रोफेसर जी we will now start taking questions from the audience. So आप लोगों के कोई सवाल है प्रोफेसर से सो आप लोग पूछ सकते हैं. आप कमेंट सेक्शन में डालिए और हम वहाँ से पिक करेंगे. तो प्रोफेसर जी पिक आप वहाँ से क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिएगा. So we got one question here. Let me see. सॉरी मैं मोबाइल में हूँ मेरा लैपटॉप मैंने ऑन नहीं करा है तो इट्स रियली स्मॉल प्रिंट सो आई नीड टू चेक. Okay, okay, great. So, the should I read the question? Yes please Okay, प्रोफेसर if you Vidya don't mind. Thank Vidya you. Prasad ji कह रही हैं, what do you think of pool of blood? Okay, now let me ask you guys a question. The question is very simple. You see a body, and if there is blood around it, what does it mean? It's a clear case of murder. Am I right? Had it been blood around Sushant, the case would have been entirely different. Neetu ji would have clicked the photograph. She would have raised her voice कि भाई उसके आसपास तो खून था. Priyanka ji would have stated the same in her interviews as well. Pool of blood narrative was started by somebody, and probably I think if I recollect, Smita Parik ji थे जिन्होंने पूल ऑफ ब्लड के बारे में बोला था, एंड बाद में उन्होंने इसकी क्लेरिफिकेशन भी दी थी that she thought that it was you know blood around Sushant's body, and Mm-hmm. she cleared her view also that it looked like there was blood around. But if you ask me this question, I don't think there was any kind of blood around the body. Otherwise, it would have been a clear case of murder right there and then, right there and then. बिल्कुल. And what is your take on keymaker प्रोफेसर. जो एक keymaker की जो theory आई है बाहर उसमें आपका क्या कहना है. देखिए, key maker is a story which is very very well made and very very well planned. Now you need to understand here, सुशांत, मेरे अकॉर्डिंगली सुशांत की जब हत्या रात को हो गई थी, या अर्ली मॉर्निंग 14 के, हम्म, ठीक है, हम्म, हम्म, हत्या हो गई थी, तो अब इन लोगों को चाहिए था कि अब क्या करें. वो हाउ डू वी स्टेज इट. नाउ हाउ डू यू स्टेज अ डेथ, how do you stage a murder into a suicide? This is exactly what you do. Now they tried their best to make it look like suicide. आप जरा ये सोचिए कि एक भी फोटोग्राफ सुशांत की हैंगिंग की है. बिल्कुल नहीं है सिद्धार्थ यार. पठानी ने, जो इतनी फोटोग्राफ्स और वीडियो बनाता है, उसने एक भी फोटोग्राफ हैंगिंग की क्यों नहीं ली? बिकॉज बॉडी को हैंग आप कर ही नहीं सकते. आप देखो ना, सुशांत के कमरे में फॉल सीलिंग लगी हुई थी, या पंखा लगा हुआ था. इन्होंने कुर्ता स्टेज करा, इन्होंने फंदा स्टेज करा, इन्होंने टुकड़ा काट के सब कुछ स्टेज करा हुआ, लेकिन या बॉडी को ये लटका नहीं सके. उसके कारण ये है कि सुशांत की हत्या स्ट्रैंगुलेशन से हुई है. आप उसका मार्क देखिए, ओ मार्क है. अगर ये बिल्कुल. बॉडी को लटकाने की कोशिश करते तो वहां पर दो मार्क्स आ जाते, एक ओ हम्म, और एक वी मार्क. पहली बात. दूसरी बात ये, सुशांत का वजन 80 85 केजी के आसपास है. सो 80-85 kgs guy, if you are trying to hang him on a false ceiling, first the entire false ceiling is going to come down. Second,
The fan, if you look at the fan, the the fins have not even bent slightly, थोड़े से भी बेंड नहीं हुए. अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं. नाउ आई एम कमिंग टू द लॉक स्मिथ पार्ट. अब इस केस में वो लोग क्या करें. तो उन लोगों ने वेरी स्मार्टली एक गेम प्लान इंप्लीमेंट करा. अब वो गेम प्लान क्या था, मैं आपको बताता हूं. इन्होंने क्या करा, एक कमरे की चाबी और डुप्लीकेट चाबी गायब कर दी और उस रूम को कर दिया लॉक. अब इनको एक आदमी चाहिए था जो कि की मेकर हो, जो आए, इस दरवाजे को तोड़े और बाद में ये स्टेटमेंट दे दैट आई केम, broke that lock, and whosoever person was inside the room was locked. और ये एक एलिबाई होगा जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आके बाद में देगा. This was their plan. And why do I say this? Because if you remember, Simran ji, when the locksmith came, जब रफीक आया, चाबी वाले का नाम रफीक है, रफीक और उसका भाई जब यहां पर आए, तो उन्होंने क्या कहा. उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ पठानी ने उनको 1:05 पे कॉल करा. उसके बाद किसी और दरवाजे की फोटोग्राफ भेज दी जो कि खुला हुआ था. रफीक चाबी वाले ने फिर दोबारा उससे पूछा कि साहब ये दरवाजा तो खुला हुआ है. टू विच सिद्धार्थ पठानी सेज दैट ओके आई. फिर उसने बंद वाले दरवाजे की फोटोग्राफ भेजी. उसके बाद रफीक और उसके भाई जब माउंट ब्लैंक पहुंचा, उन्होंने बोला कि ये जो है ताला, ये आसानी से नहीं खुलेगा. या तो तोड़ना है तो हम तोड़ सकते हैं, नहीं तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा अगर चाबी बनानी है या खोलना है. सिद्धार्थ पठानी ने कहा नहीं, हमें तो चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी इसको खोल दो, तोड़ दो. तो रफीक ने उस दरवाजे को के लॉक को तोड़ा. नाउ इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज दैट जब भी आप किसी ताले वाले या चाबी वाले को अपने घर बुलाते हो कोई ताला तोड़वाने के लिए, उसके बाद आप वो चेक भी तो करेगा ना कि ताला टूटा है कि नहीं. These people did not allow the locksmith to open that door. My Yeah. question here is why? And Yeah. you also should ask why, what is the reason that these people did not allow that locksmith chabiwala to enter that room? The answer is very simple, because behind that locked door Mm. was Sushant's body. Yeah. Behind that locked door, Sushant was already murdered. Mm. There was nobody who was hanging. And that Okay. is the reason why. आप ये देखिए, सिद्धार्थ पठानी और फ्लैटमेट्स क्या कहते हैं कि हम तो सुबह से खड़का रहे थे दरवाजा और कोई खोल नहीं रहा था अंदर से. Yeah. सुशांत Yeah. सर खोल नहीं रहे थे. तो जब चाबी वाले ने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया, तो तब तो तुरंत अंदर जाना चाहिए था. बिल्कुल. They should have rushed inside, but they did not. They Yeah. waited for Chabiwala to leave. They Yeah. waited confirmation from Dipesh, who went to leave the Chabiwala downstairs, paid him 2,000, came back, and then they entered and made up their stories. Mm-hmm. This exactly because they wanted an alibi, a person who can give a statement बाद में to collaborate with their false narrative. You see, Yeah. everything was getting planned. सिमरन जी, भाइयों बहनों, ये चीज समझने वाली है. 14, 15 इस डेट पे कोई हंगामा नहीं हो रहा था. बिल्कुल. Everything was going as per the cabal's planning. सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था. पुलिस ने स्टेटमेंट जारी करी 15-20 मिनट में. उस स्टेटमेंट को ऑफिशियल करने वाला कौन सी चीज होगी? ओनली वन पेपर कैन कोलैबोरेट दैट, एंड दैट वाज द कूपर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, Mm. which can seal their deal. And Yeah. this is exactly, आप chronology को अगर समझो ना, this is exactly, they made a person an alibi. Mumbai police made a statement. Cooper Hospital gave that false postmortem report. So सबको इन्होंने साथ में जोड़ दिया और उन्होंने बोल बिल्कुल. दिया कि और साथ में
At the same time, you know, Bollywood, his own fraternity, people started spreading wrong rumors about Sushant Singh Rajput, about his depression and his bipolar, which is completely baseless. Bakwas. This is what I wanted to say बिल्कुल। about नहीं, Sushant Singh. डेफिनेटली बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब बहुत ज्यादा उसको टर्मिनेट किया जितने भी वहां पे एविडेंस थे। अच्छा, एक क्वेश्चन है विद्या जी का, why did Mumbai police did not seal the crime scene? Absolutely. See, this is exactly what I used to talk. I always used to talk about in spaces Yeah, that how is a conspiracy and a cover up done? कैसे होता है? अब सपोज करिए कि एक जगह क्राइम हुआ है। अब उस क्राइम को कवर अप करने के लिए, दबाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? आप उस क्राइम सीन को खोल दोगे। मल्टीपल कंटामिनेशंस हो जाएंगे। exactly. So this is exactly what happened. The crime scene was not sealed purposely. Otherwise, tell me one thing, under whose authority were the mysterious girls or the makeup man or Sandeep Singh or Mahesh Shetty or several other people allowed to enter that gate? If you look at the media coverage very closely, these guys talk to the gatekeeper. The gatekeeper looks at one of the policemen and then opens the gate, which means that they were already there was a they had known कि हाँ ये लोग आएंगे इनको अंदर आने देना. Otherwise, what is the reason? Are the mysterious girls part of the police team? Is Sandeep Singh part of the investigating team? No, he was not. Neither was Mahesh Shetty. So why were they allowed inside? बिल्कुल सही कहा है। मतलब वो लोग, इफ यू सी ऐसा लग रहा था कि सबको जैसे कोई गेस्ट आ रहा है आपके घर में एंड द गेट कीपर इज अलाउइंग यू टू गो, ओनर ने बताया कि ओके मेरे गेस्ट आ रहे हैं एंड लेट देम कम इन विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। तो इस तरह से सब लोग को अंदर जाने दिया था। वी ऑल हैव सीन दैट। अनदर क्वेश्चन आई गॉट प्रोफेसर जी, सो Ria left on 8th or 9th. So, I mean, what do we conclude here? Do we say 8th, or 8th, like I think afternoon, or 9th morning? Okay. So the conversation on the eighth morning, what Sushant had with Ria was, Ria said that she has an appointment with Susan Walker. Yeah. But Sushant said, my sister Mituji is coming. My sister is coming. So if you want to take this session, you can do it at your place. So Sushant had asked her to leave the place. Around 1:30 on the 8th of June 2020, she had left Sushant Singh Rajput's place. And around 5:30 के आसपास Meetu ji had come on same date, 8th June 2020. आपकी आवाज नहीं आ रही सिमरन जी. I'm sorry. मेरा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग, जैसे कि हम सभी को पता है कि महेश शेट्टी was very close to Sushant, right? He was known as a best friend. काफी उन लोगों की फोटोग्राफ्स हम लोगों ने देखी है, एंड दे हैव वर्क टुगेदर इन आई थिंक 2 सीरीज जो हैं उसकी, पवित्र रिश्ता एंड द अदर वन, द वेरी फर्स्ट वन, they have worked together. um how come like Sandeep Singh, I mean, why Sandeep Singh was taking control of everything? Why Sandeep Singh was with Meetu Singh? The way he was holding Meetu, जैसे
I wouldn't let anybody to touch me like that. The way he was, उसके कंधे पे, shoulder पे, जिस तरह से उसने हाथ, ऐसे कर रखा था. And have you also noticed जिस तरह से उसने जिसे कहते हैं वो उसको पकड़ा हुआ था, लाइक कंट्रोल, मतलब बहुत बुरी कि if you moved, if you speak, or if you say or utter any word, that's it, your life will be in trouble. It's kind of a threatening. Do you think i- um, that he was or he has threatened me too while he was taking like we all have seen कि कैसे वो हर जगह उसको अपने साथ लेके जा रहा है, and of course he was on a phone as well. एंड आई एम श्योर मीटू ने सारी बातें सुनी होंगी जो भी वो बात कर रहा था. ये तो है नहीं कि वो उसकी आवाज मीटू तक नहीं पहुंच रही होगी. तो आपको क्या लगता है कि ये जो है एक जो सो कॉल अपने आप को दोस्त बता के एकदम से ही जंप्ड इन फ्रंट, लाइक सब कुछ कंट्रोल उसने ले लिया था अपने हाथ में. एंड द सेकंड वन, एंटायर इंडिया और वी ऑल नो कि महेश वाज द वेरी अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हिम. वो क्यों नहीं था एक्शन में, या वो क्यों नहीं था पिक्चर में? आपका क्या सोचना है इस बारे में? देखिए, मैं भी शुरू से ये कहते आ रहा हूँ कि संदीप सिंह हैज बीन अ वेरी dubious character in this entire case. Now, we all need to understand one thing, that what was the state of mind of Meetu ji at that time? Yeah, a sister who has just lost a very dear brother of her has to be in a state of shock, trauma. Yeah. Mm. That sister was all alone as far as family is concerned, all alone. So she had to give news to her relations, her family members. And she was doing that. If you see, she was on the phone Mm. continuously. So Yeah. now, in that state of mind, if she looks around and she sees somebody, now carefully also observe that was a Sunday day. She was looking at people who were, you know, police wale. There are certain people, civilians bhi the. She might have thought, okay, fine, this is the person who is taking charge of the crime scene. How would she know कि ये कौन है? Now, a lot of people say that, and even the family says openly that we don't know who Sandeep Singh is. हम नहीं जानते संदीप सिंह को. And lot of people on Twitter says कि यार संदीप सिंह की तो काफी पिक्चर्स हैं सुशांत के साथ. So I put this question on people. जरूरी नहीं है कि सुशांत अगर किसी को जानता हो, if Sushant knows somebody, they can be friends. But it's not necessary that that friend has to be a friend of his family also. आप समझ रहे हैं? Because Sushant बिल्कुल. was known by many people in Bollywood. So Sandeep Singh knew Sushant, yes, but he was not a family friend of Sushant. The family had no idea about who this character was. And dubious character, why do I say that is, he was taking control of the crime scene from the word go. Yeah. Whereas he was not in touch with Sushant Singh Rajput for over a year. Yeah. He has never been to Mount Blanc. इससे पहले तो वो केपरी हाइट्स में था. माउंट ब्लैंक पे तो संदीप सिंह कभी गया ही नहीं. तो मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि उसको एंट्री मिली कैसे वहां पर. हाउ डिड ही एंटर दैट प्लेस? इट वाज लुकिंग बिल्कुल. लाइक दैट ही वाज चीफ ऑफ पुलिस देयर. एम्बुलेंस वाले से बात कर रहा है, पुलिस वालों से बात कर रहा है. कभी कह रहा है कि मैं ऊपर गया, क्राइम सीन मैंने रूम देखा. कभी कह रहा है कि नहीं, मेरे को तो ऊपर जाने नहीं दिया, मैं नीचे था. कभी कह रहा है मैं अपने घर पे था. कभी कह रहा है कि मेरे को महेश शेट्टी का कॉल आया. कभी कह रहा है कि संजय निरुपम के साथ था. सो मल्टीपल स्टेटमेंट्स. कभी कह रहा है कि मुंबई पुलिस जो कर रही है वो मतलब सही कर रही है. कभी कह रहा है, साथ में ये भी कह रहा है, सुशांत तुमने ये क्या करा. So you understanding? Now Yeah. this guy probably was sent, probably was sent to take care of the situation, to handle the situation. And and जो आप बात कर रहे हो, whenever how do you take control of a person when he is emotionally down?
Now, the family Exactly. member Neetu Singh was already traumatized and emotionally down. अब Hmm. उस वक्त में उसने उनको बहला फुसला के कह दिया होगा, अच्छा सिस्टर दीदी मैं देख लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, बट ही हैड his motive was entirely different. Yeah. His motive was जल्दी से जल्दी बॉडी यहाँ से जाए, पोस्टमार्टम इसका हो, सर्टिफिकेट लें, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करें और फैमिली को कहें सो दैट दिस केस गेट्स legally closed. And this is exactly, if you look at the chronology, this is exactly what happened. He was Mm. not only present at Mont Blanc, he was present the entire time at Cooper Hospital, along with Mahesh Shetty. Yeah. Now you are saying, and I completely agree with you, Mahesh Shetty was more close to Sushant as Mm. compared to Sandeep Sandeep Singh. Singh. Yeah. Then why was he not in front? Hmm. He should have been in front, but he Bilkul. was not. In fact, just before June, on May 29th, evening time, I think, or early evening, he met Sushant outside Mont Blanc, and they had a, you know, verbal dialogue between each other. Hmm. So we have seen all that. We have seen Yeah. all that. Yeah. But this guy, Sandeep Singh, has always been a dubious character. And मैं तो हमेशा कहता हूँ कि फ्लैटमेट्स के साथ इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, नार्को का तो चलो कोर्ट से अप्रूवल होगा और फिर कंसेंट भी होता है, बट Hmm. द एजेंसीज नीड टू इन्वेस्टिगेट this person Sandeep Singh in and out. There is one small information I wanted to give. In 2017 or 2018, Sandeep Singh visited Mauritius. Yeah. And Mauritius mein, he was in room 221. He was staying there. In the same hotel, there was a family who had a boy from Switzerland. Hmm. संदीप सिंह ने उसको बहला फुसला के मोलेस्ट करा, उस लड़के को। मॉरिशस पे इसके ऊपर एक केस भी पड़ा हुआ है Please संदीप say. के ऊपर। Yeah. Yeah. नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये रातों रात मतलब overnight, how did he manage to get out of this? Now I am not saying or I am throwing any blinds. People Hmm. can just Google and find out about Sandeep Singh case in Mauritius. They will come to know. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. I mean, एक like it's really surprising कि number one how he's like out roaming out freely जो उसके ऊपर पहले से केस है. And secondly अभी भी we don't know कि did if CBI did call him for investigation or not or questioning. Uh, but you mentioned about this Cooper Hospital and postmortem. तो आपका क्या सोच रहे हो? I mean, what is your take on the postmortem at Cooper? Like, जिस तरह से वहाँ पे किया गया है in a rush, I would say, रात को. You said it yourself, Simran Ji, that where was the hurry to perform post-mortem report? My brothers and sisters, understand one thing. It was a Sunday. Sunday Mm, ko specialist main doctors are entirely off. yeah. How come on a Sunday a post-mortem and that too at the night is performed? My first point. My second point is in June 2020 there was a lockdown. In all the hospitals, it was mandatory. Anything, any patient, anybody which enters any hospital first has to go through RT-PCR test, which will determine whether the person is COVID positive or COVID negative. This is Mm, exactly what happened in Disha Salian's case. The body was kept for 2 days because 2020 में RT-PCR used to take 24 to 48 hours टेस्ट रिजल्ट्स के लिए. दिशा सालियान के केस में 2 दिन बॉडी रखी,
और उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ. बट सुशांत के केस में द पोस्टमार्टम was done That's not. in the night, which is against the protocols. They don't have that equipment to perform. बिल्कुल. And most importantly, and the biggest cover up in this postmortem is that the time of death is not mentioned at all. People Hmm. are not asking this. This is the most relevant question. Why is the time of death not mentioned? Why? What is the reason behind it? What is Mhm. the reason behind audio videography not done in Sushant Singh Rajput case? These are questions which needs answers. Hmm. Nothing has been written about Sushant's injury marks. आप आपके सामने है. Hmm. The insider, the man who performed on Sushant Singh Rajput, Mr. Roop Kumar Shah, has come out with his own statement. And his statement is so bold, so thorough. He clearly states that there are injury marks starting from his eye. Eye has become black, थोड़ी सी उस पे injury marks है. There are injury Hmm. marks on his hands. There are injury marks on his leg, probably a fracture on his leg, Hmm. which clearly states, and he clearly says, यार देखिए, a man who has worked in Cooper Mortuary Department for 28 years, worked on 60,000 bodies. मतलब 60,000 कहने में बहुत आसान है, लेकिन आप सोचिए 60,000, ओवर Yeah. 60,000 बॉडीज. वो इंसान वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देख के बता सकता है, सिर्फ देख के, कि ये बॉडी जो है मर्डर की है या सुसाइड की है. और यही That's. रूप कुमार शाह ने कहा Hmm. दैट इनके जो लिगेचर मार्क है दैट इज ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, दैट इज नॉट ऑफ हैंगिंग एट ऑल. ही हैज क्लियरली सेड दैट. Yeah. And he also stated that he told the doctors present, other people, other doctors who were performing the postmortem, that sir, इसका तो वीडियोग्राफी करना चाहिए. पर उन्होंने कहा कि नहीं, फोटोग्राफी हो गई है इसकी, इतना काफी है. वीडियोग्राफी के लिए मना कर दिया और बोला कि आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते. फॉर अ सिंपल रीजन, अगर वीडियोग्राफी होती सिमरन जी, अगर वीडियोग्राफी, ऑडियो वीडियोग्राफी होती, देन उसमें उनको एक एक पार्ट सुशांत का कवर करना होता. दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल. और उसमें दिख जाता इंजरीज. देखिए, फोटोग्राफ्स में फोटोग्राफ्स में कभी आप क्लियरली नहीं देख सकते. बट जब वीडियो ऑडियो चल रहा होता है और पोस्टमार्टम चल कर रहे होते हैं डॉक्टर्स, देन दे स्टार्ट फ्रॉम द टॉप टिल द बॉटम, एंड दे हैव टू कवर ईच एंड एवरी aspect of the body. This is that simple. And hence, they did not do the postmortem. Because कहीं पर उसका मुक्के का निशान भी होगा, मारने का निशान भी होगा, कहीं हड्डी टूटी होगी, तो वहां पर भी जो बॉडी होती है, जो स्किन होता है, दैट टर्न्स इनटू ब्लू, वो पर्पलिश ब्लू, उसमें तो इजीली इंजरी मार्क्स कैन बी सीन. Was that the reason why they did not do it? The answer is in front of you. Absolutely. Absolutely. And these things happen for a reason. Again, I'm saying, and I will repeat it again and again and again. These people did not anticipate that a movement of this magnitude will start. These people never in their dreams anticipated that CBI will take this case. They thought कि हाँ, बड़े आराम से हम लोग कवर अप कर लेंगे और इसको एक सुसाइड का रूप दे देंगे. इट्स दैट सिंपल टू अंडरस्टैंड. है बिल्कुल. बिल्कुल सही कहा आपने प्रोफेसर. एक मतलब बहुत
according to them they thought कि बहुत clearly सब कुछ clear कर देंगे, सब कुछ hide कर देंगे, and you know it will be like after a few days people will forget, they will just cry for 2 days and forget everything, and that's it, it's done and dusted. One question I got, and after that, from the audience, if anyone wants to interact with Professor, then we'll share the link with you guys, so please join. Professor, I got a question here. First of all, it's really sad to hear about Fudge, that sadly he passes away. But at the same time, I'm happy that he's with his dad. You know, with Sushant, with his love. They're gonna be like together. Uh, and do you remember I think we all saw that. uh, I think it was Neeraj who was taking him out for walk on the same day, 14th morning. I'm not really sure, Professor. Was it like that video was before the announcement of Shashank's death, or was it after? I'm a bit confused here. If you can please explain. Sure, absolutely. Logically, मैं इसको explain करूँगा. Before that, my heartfelt condolences for the loss of a family member of Sushant Singh Rajput, Fudge. And you see, Simran ji, these pet dogs जो होते हैं, इनकी life बहुत कम होती है. I wish that they had more life, like we humans have, because ये अपनी सारी जिंदगी हमें खुश करने में बिता देते हैं, हमारी रक्षा करने में बिता देते हैं. So I felt really sad, uh, on the loss of Fudge. Now coming to your question about Neeraj, Mm-hmm. आपने पूछा कि क्या ये डेथ से पहले का है या बाद का है. देखिए, Mm-hmm. अगर उसको कोई कैमरा कवर कर रहा है, कौन कर रहा है? कैमरा, रिपब्लिक का. दैट मीन्स रिपब्लिक मीडिया कब आई? डेथ के बाद ही आई ना. पहले तो नहीं Okay, आई. okay, okay. दे वोंट बी प्रेजेंट बिफोर. बिफोर तो Mm-hmm. माउंट ब्लैंक प्रेजेंट होने का कोई फायदा ही नहीं है. सो दिस हैपेंड on the 14th itself, Mm-hmm. after the ambulance had left. Mumbai police allowed Neeraj to take the dog out for a walk. Yeah. So logically, if a media is covering, that means that coverage has to be after the demise of Sushant Singh Rajput. Mm-hmm. एक और क्वेश्चन था यहाँ पर किसी का. Who am I? Do you think postmortem was done fully or just not done it? Absolutely. मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ. शुरू से बोल रहा हूँ. Who am I? That the postmortem was not performed as per the rules and regulations. And मैं भी बोल रहा हूं, एसएसआरियंस भी शुरू से चिल्ला रहे हैं. शुरू से 2020 से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सुशांत के साथ अन्याय हुआ, ब्रूटली उसको मारा, उसकी आंख पे मार्क है, उसके बॉडी पे इंजरीज हैं, उसका पैर टूटा हुआ है. और इस स्टेटमेंट को मोहर किसने लगाई? रूप कुमार शाह ने. Yeah. उनकी स्टेटमेंट ये प्रूव करती है, जो जो एसएसआरियंस कह रहे हैं वो एब्सोल्युटली राइट है. इट्स एब्सोल्युटली बैंग ऑन 100% राइट. इन लोगों ने, सिमरन जी, ठीक तरह पोस्टमार्टम करा ही नहीं. Yeah. नहीं, वो तो सबको, हम लोगों को पता है कि इन्होंने कोई पोस्टमार्टम नहीं किया, बिकॉज जहां तक मुझे याद है, किसी ने बताया था कि व्हेन दे डू पोस्टमार्टम ना, तो फोरहेड का भी वो, मतलब पूरे टॉप टू बॉटम वो पोस्टमार्टम करते हैं, सब कुछ लाइक कट करके, एंड दे चेक एवरीथिंग. तो वो हमें नहीं दिखा है पिक्चर में, जो फ्यूनरल के टाइम पे था, उसका फेस दिख रहा था. बाकी दे हैव कवर्ड लाइक A to Z. बट अभी
मतलब उस वक्त देख करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई पोस्टमार्टम किया है या कुछ। एंड सेकेंडली, इफ यू नोटिस, उसके जो यहाँ मार्क था आई के ऊपर, वो भी नहीं दिख रहा था इतना। मे बी दे हैव कवर अप विद मेकअप और एनीथिंग। So anyone would like to join, please join, or anyone got any question for professor, please आके आप लोग पूछिए। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग लिंक शेयर कर देंगे आपके साथ। तो कोई भी आना चाहे प्लीज आइए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन जब तक कि कोई ज्वाइन करता है, मेरा आपसे है प्रोफेसर, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड and how are the next step we should take according to you? what I feel is what I now feel is सबसे पहले तो CBI should have investigated the entire people present in the postmortem room, which included helpers. Mm-hmm. जैसे रूप कुमार शाह जी हैं, ठीक है? See, Mm-hmm. रूप कुमार शाह is not a doctor. Yeah. He's a helper, right? Yeah. But let me put it in a different way. जब कोई हॉस्पिटल में होता है, doctors are never there 24 hours. It's always the nurses and the helpers who are around. Yes. The nurses, in fact, in certain cases know much more than the doctor. डॉक्टर तो 24 घंटे में सिर्फ 2 बार आता है, राउंड्स Mm-hmm. पे आता है, वो ना वो चले जाता है। तो मोस्टली things are done by these helpers and nurses and these people. So it becomes extremely important for the agencies to take statement of each and every individual present inside that postmortem report room. Now I understand that CBI must have investigated and somehow could not find this particular person, Roop Kumar Shah. Now that this guy has come out with a statement, सबसे पहले क्या करना चाहिए? His statement should be recorded. Once his statement is recorded, then that statement will be matched with the postmortem statement. When the agencies match both the statements, they will find discrepancies. आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए रूप कुमार शाह जी ने क्या क्या स्टेटमेंट कही है, और उसमें से कोई भी चीज क्या इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको नजर आ रही है? कुछ भी नहीं नजर आ रहा। Then the CBI is going to call all those doctors. That how is it possible that one man who was performing was part of your postmortem team present in that postmortem room is stating something, and why was videography not done? So they should do custodial interrogation of all these doctors. Please carefully observe his statement. He also states that there were two female doctors which were present. I want to know that postmortem report में दो female doctors कहाँ हैं भैया? Where are these? बहरहाल, the first course of action should be that this has to be investigated. If this report, which I feel it is wrong, the postmortem report, इनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई को लगता है कि ये गलत रिपोर्ट बनाई है, तो दिस रिपोर्ट becomes null and void, and all those doctors will be suspended and arrested at the same time. ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो right, anyone, any questions? Okay, there's one question. So it's from who am I? So Roop Kumar Shah ji just observed the body, but he did not do opening of the body at all.
He does actually. That's what he said. But Professor will explain. Professor Ji. See, it's very simple. He was present inside that post mortem room. He was present under the capacity of a helper. अब हेल्पर क्या करता है? कभी कभी डॉक्टर्स कहते हैं हाँ जी, ऐसा कर, इस बॉडी का ऊपर से थोड़ा चीरा कर, या ऐसे कर, या ऐसे कर, और दे ask for instruments, scalpel दे दे, कुछ दे दे, you know, those cutters. So these are people who was present inside. When he's making a statement, he's clearly saying Hmm. that he was present. If he is present inside that postmortem room, that means he's part of the team performing on the postmortem of Sushant Singh Rajput. It is that simple. तो उसको एग्जैक्टली मालूम है, उसने क्लोज प्रॉक्सिमिटी से सुशांत की बॉडी को देखा है, और ये पहला आदमी नहीं है. लेट मी करेक्ट यू. रूप कुमार शाह इज नॉट द फर्स्ट पर्सन. इससे पहले भी एक ऊपर का एम्प्लॉय है जिसकी स्टेटमेंट आई थी, जिसने कहा था कि सुशांत की बॉडी पे जो मार्क के बारे में कहा. उसने ये भी कहा कि सुशांत का जो पैर था वो फ्रैक्चर था. Hmm. He also said there were needle marks present on the feet. And the most important part, जो कि सबने सोचा कि यार ये ऐसे ही बोल रहा है, he heard from his own ears doctors were talking that यार ये तो केस मर्डर का है, Hmm. इंटरव्यू में. Hmm. So I'm saying that why are the agencies not taking these people seriously? And if they are, it's good. Yeah. But these are very important people, people of interest when it comes to Sushant Singh Rajput case. But these are eye Definitely. openers. मतलब आप एजेंसीज और सारे क्या सोच रहे हैं कि ऊपर से भगवान आएंगे नीचे बताने कि भाई सुशांत सिंह राजपूत का की हत्या हुई थी, इसका मर्डर हुआ था. Hmm. Hmm. सारे सबूत आपके बिल्कुल सामने हैं यार, बिल्कुल सामने. टॉप बिल्कुल. फॉरेंसिक टॉप फॉरेंसिक्स जो है वो बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, 2020 से बोल रहे हैं, फॉर गॉड से, that the ligature mark is of strangulation but not due to hanging. हमारी स्पेसेस में कितने डॉक्टर्स आए हैं Hmm. and they have spoken their heart out, explaining in detail about the ligature mark, Hmm. about other injuries on Sushant's body. इतनी ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन करा है. So I'm sure that these agencies cannot overlook that. Now, is it an attempt to politically suppress this case? Otherwise, I don't see any reason why a charge sheet is not been out till yet. By now, it Hmm. should be charge sheet should be out, and 302 should be implemented. I completely understand, Simran Ji, that this agency is working on those angles, that who killed Sushant, how they did it, and why. And they don't just have to solve the case, but they have to solve it, prove it in the court of law. They have to make Yeah. that watertight case. But start now. I mean, it's been 2.5 years now. Yeah. बिल्कुल सही कहा आपने. So I mean, they should. It's. I think I would say like it's just a matter of few more um, months, and hopefully they will come out with charge sheet and 302, जो बहुत important है केस के लिए. 306 से 302 को impose करना, and फिर उसके बाद then we have to wait for the trial, and that would be the you know big fight, right? अभी तो हम लोग स्क्रीम कर रहे हैं कि रोर कर रहे हैं कि सीबीआई चार्जशीट बाहर लेकर, and then we gonna again fight कि culprits को जितनी strict और ज्यादा punishment मिले उतना अच्छा होगा. एनी आई मीन हम लोग ने लिंक शेयर किया है. एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस प्लीज जॉइन अस, या फिर मैसेज हैं आपके तो वो बताएं, हम लोग देंगे.
So I don't think so, Professor, that anyone wants to join us, but that's perfectly fine. um आपसे लास्ट मैं पूछना चाहूंगी, लाइक एंड ऑफ दिस सेशन, एसएसआरियंस के लिए आपका क्या मैसेज है? व्हाट वुड यू लाइक टू से टू एसएसआरियंस? Let me start by saying this, that it is the collective effort of each and every SSRian and family that CBI came in picture. Please note the statement by the My Lord of Supreme Court. The CBI had already taken over this case on 5th August. Hmm. On 19th August, Supreme Court gave the approval, go ahead. But in the My Lord statement, अब ना एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं मालूम, बट मैं आपको बताता हूँ. दे द द पीपल of this nation are not happy with the kind of investigation that has happened on Sushant Singh Rajput case. Hence, this is what, part of one of the statements. Hence, we approve the Hmm. case to be handed over to Central Bureau of Investigation. Who are these people they are referring to here? These are SSRians. From the day one, Absolutely. they have been roaring day and night. Extremely important Hmm. to be together, to be united, and roar each and every day. It doesn't matter if you have to repeat your question again and again, asking the same things, repeating the same questions again. Building that pressure is very important, Hmm. because if you let go of one hand, the entire chain is going to break. You may not agree with me, or I may not agree with you, but within our hearts, we know that you are here for Sushant, you are doing it for Sushant, I am doing it for Sushant in my way. That Absolutely. that feeling should always be there. That feeling should always be there. Hmm. कोई किसी को पसंद करे ना करे, एग्री करे ना करे, डिसएग्री करे, दैट्स परफेक्टली फाइन. सबको, दोनों पार्टीज को मालूम है दैट यार चलो कोई बात नहीं, but at least that other person is raising his voice for Sushant. That Hmm. is most important. Our fight is not among us. Always remember that. Our fight is with the system. Our fight is with those authorities. We want to know who killed Sushant Singh Rajput. Hmm. These, this answer we are going to get from the agencies, from the authorities itself. We are not going to get it from, fighting among each other or एक दूसरे की गलतियां निकालने में. No, ये एजेंसीज का से पूछना है हमें. तो हमारा सारा ध्यान रहना चाहिए एजेंसीज के ऊपर. हमारा सारा ध्यान रहना चाहिए, हाउ डू वी अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल टू जॉइन आवर मूवमेंट, टू रेज देयर वॉइस. लोगों को बुलाएं. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दीज प्रोटेस्ट जो होते हैं, whether it's happening in Mumbai or Delhi, Kolkata, or any place in India or globally, is extremely important. Hmm. मैं कहता हूँ, even if one person joins, that one person, word of mouth will bring many more. और बिल्कुल. आएंगे और जुड़ेंगे. So it's extremely important to stay united Hmm. and stay together. बिल्कुल सही कहा आपने. um, नीचे मैं देख लेती हूँ. विनोद जी, थैंक यू. एंड विनोद जी लिखते हैं, सर पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को घर लेके जाते एक बार वो भी नहीं हुआ एसएसआर केस में. ये एब्सोल्युटली बहुत राइट.
ये विनोद जी का सवाल बहुत सही है, और थैंक यू विनोद जी फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। इट्स, आप देखिए ना, सुशांत सिंह राजपूत वाज नॉट अ कॉमनर, ही वाज अ सुपरस्टार। आप हम्म बाकी सुपरस्टार्स की आप निकाल के देखिए जिनकी डेथ हुई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हर बॉडी को एक लोकेशन पे लेके गए, वहां पर उनके फैंस ने रिस्पेक्ट दी, they gave they paid their last rites, and then the body was taken to the cremation ground. In Sushant's case, the family wanted to take the body to Patna, वो तो पटना ले जाना चाहते थे, but they were denied because of COVID protocols. वहां पर उन्होंने COVID protocols लगा दिए, हम्म they were denied. I really want to understand what was the hurry for these Cooper Hospital to perform postmortem, and immediately next day 15 तारीख को, अगर आपको याद है, 15 तारीख को विनोद जी बारिश हो रही थी हम्म मुंबई में, हमने वीडियो में देखा है, बारिश हो रही थी, धुआंधार बारिश हो रही थी, और किस बेदर्दी से सुशांत की बॉडी को उन्होंने बांधा हुआ था। या सो आई मीन दीज थिंग्स डज मैटर, इट मैटर्स। प्रॉब्ली दे वांटेड कि यार जल्दी से जल्दी ये कोविड प्रोटोकॉल की आड़ में ये सब हम लोग दबा दें केस को जल्दी से जल्दी, एंड दैट्स व्हाई दे टुक द एडवांटेज ऑफ अ फैमिली हु वाज इमोशनली डाउन दैट टाइम। आप ये भी अंडरस्टैंड करिए ना, फैमिली की हालत क्या होगी, इमोशनली दे वर डाउन, ट्रॉमेटाइज्ड विद द न्यूज ऑफ देयर डियर ब्रदर, और के सिंह जी के बेटा गुजर गया, तो वो किस दौर से गुजर रहे होंगे उस वक्त। उस वक्त तो यार इंसान की हालत भी नहीं होती कुछ सोचने या समझने की, उस मतलब सिवाय सुशांत के बारे में उनको कुछ नहीं समझ आ रहा हो। इन लोगों ने उस चीज का एडवांटेज लिया। मैं तो ये कहता हूं सिमरन जी, कोविड नहीं होता अगर कोविड नहीं होता तो जनता कितनी सड़कों पे आ जाती है, आप मतलब 2020 में, और चिल्ला कितना शोर शराबा होता था। बिल्कुल। आई मीन आई रिमेम्बर प्रोफेसर जब वो निर्भया केस हुआ था, at that time people used to sit in front of was it India Gate or Gateway of यस India, यस, somewhere, एब्सोल्युटली, right? They एब्सोल्युटली। used to sit there with candlelight हुआ है, candle um, रख करके वो लोग वहाँ पे protest कर रहे थे। and yes, of course, अगर अभी कोविड का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, because even this year COVID is back, so now people have to take precautions, so नहीं बाहर आ सकते हैं इतना जैसे सोचा था। but again I hope कि इतना नहीं हो कि हमें you know aggressively अब बाहर आना पड़े। इससे पहले ही सीबीआई अगर बाहर आ जाती है चार्जशीट लेकर के और 302 लगा देती, that would be brilliant. um, I'm just looking at the comment. Who am I said they just wanted the family not to see the entire body, so hurriedly cremated the body. That's absolutely right. They didn't want कि कोई भी देखे, like उनके father या उनकी sister या उनके जो brother in law है, उन्होंने संदीप सिंह ने बहुत जल्दी करा है हर चीज को। एंड एंड उससे एक क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में, आज इट जस्ट स्लिप नाउ, पर आप um, सोचिए सोचिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत ही प्लानिंग के साथ ये कहानी रची गई है, बहुत ही प्लानिंग के साथ। अदरवाइज आप ये सोचिए कि सुशांत कुछ घंटे पहले कुछ डायरेक्टर्स के साथ अपनी मूवी के बारे में बात कर रहा है, हम्म अपनी सिस्टर को कहता है कि 14 तारीख को ब्रंच पे हम एक साथ मिलते हैं और खाना खाते हैं, हम्म डायरेक्टर्स को कहता है कि 15th को जूम कॉल सेट करो और मूवी हम्म की डील हम लोग सील करते हैं स्क्रिप्ट सुनने के बाद।
ये ये सारा कुछ 13 को हो रहा है, ठीक है? Yeah, तो 14 को व्हाई वुड ही टेक हिज ओन लाइफ? exactly. सी, ये कहानी इन्होंने रची है बहुत स्मार्टली। सुबह Mm, उसने जूस पिया, पोमोग्रेनेट जूस पिया, नारियल पानी पिया। अगर पिया तो ग्लास कहाँ है भैया? आप कमरे में देने, वो कहते हैं कि हम कमरे में देने गए, वो कमरे में उन्होंने ग्लास, दोनों ग्लास ले लिए, पोमोग्रेनेट जूस का भी और नारियल पानी का भी, एंड ही टुक इट इनसाइड। सो वेयर आर दोस ग्लासेस? Why mm, are there no fingerprints inside that crime room except of just Patani? yeah, will be three fingers. और वो भी थ्री फिंगर्स। अलमारी खुली हुई अलमारी देखिए आप। Yeah, आपको ये सुशांत की अलमारी लग रही है? किसी एंगल से लग रही है yeah. आपको? ये यही सुपरस्टार की क्वेश्चन अलमारी है? यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली थी कि डू यू थिंक कि वो जो रूम है वो सुशांत का है? आई डोंट पर्सनली थिंक, पर आपका क्या कहना है? बट लाइक मैं मैं इट हर लुक्स एक सो चीज ना, मेसी. मैं हर एक चीज ना लॉजिकली देखता हूँ। आप सिर्फ ये देखिए कि सुशांत का एक वीडियो है, उसके हम्म. उसके घर का हम्म. एक वीडियो है जहां पर वो अपनी बुक्स सेटअप कर रहा है, एक एक बुक को पहुंच के सिस्टमैटिकली लगा रहा है। हम्म. दिस शोज कि एक इंसान हाउ ऑर्गेनाइज्ड ही इज इन हिज लाइफ। ही यूज्ड टू राइट बुक्स, अपनी टू डू लिस्ट बनाता था कि कल मैंने Yeah. क्या करना है, सब कुछ, ठीक है? दिस शोज हाउ ऑर्गेनाइज्ड अ मैन इज। डू यू हम्म. थिंक, लुकिंग एट दैट कबर्ड, कि वो सुशांत के होंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं. Yeah. दूसरा It's- पॉइंट मेरा ये है, आप कमरे को और उस वीडियो को ध्यान से देखिए। वो कमरे में आपको नजर क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं। मेरे को तो दैट रूम इज स्टेज्ड, हम्म. सिवाय सिवाय बेड के, बेडशीट्स के, एक्सेप्ट फॉर दोज मेडिसिन, वो जो बैग में है, बैग के पास और प्रिस्क्रिप्शन पड़ी है। हम्म. ऐसा कभी होता है? आपने किसी के घर देखा है? सुशांत was a person who was who kept his house so beautifully with Yeah. decorations and everything so beautifully. Why would he keep a room which is totally empty? सिर्फ एक पेंटिंग लगी हुई है, और डू यू सी एनीथिंग एल्स? बट पहले वीडियो आप देखिए सुशांत के घर का, इस रूम को भी दिखाया हुआ है, सेम रूम, हम्म. हम्म. और डेकोरेटेड। द रूम हैज बीन डेकोरेटेड। और अभी हम्म. देख लीजिए, अभी ओनली द बॉडी इज देयर, बेडशीट इज देयर, और पास में मेडिसिन पड़ी हैं। सो they wanted exactly the same thing what they had planned. हम्म. They बिल्कुल. wanted to show this. Yeah, absolutely. So I can see Sachin in live, जो chat है वहाँ पे. Sachin, why don't you come and join us? We got Surya and Vidya Ji, Surya Ji, Trips. Please join, guys. And प्रोफेसर से आपको जो क्वेश्चंस हैं आप पूछिए, रखिए आप. यू नो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे याद नहीं है. So we would love to hear from you guys as well, your points as well. So please join. Okay. I don't know. Sometimes I also feel that everything in Sushant's life started in 2019 when Ria entered his life. The Hmm. entire the entire life of Sushant Singh Rajput changed. She systematically removed people from his life, including including she distanced his family members from him. His close friends, Simran ji, uske close friends, ex-workers, staff members, सबकी इंटरव्यूज आप निकाल के देखिए, हर एक ये बोल रहा है कि इट वाज इम्पॉसिबल टू गेट इन टच विद सुशांत सिंह राजपूत. Yeah. Own his own father
was not able to get in touch with him. बिल्कुल. And the reason is Ria. Yeah. But I failed to understand where she was on the 14th. She was chatting with that, वो क्या नाम है उसका, महेश भट्ट, टकलू. Mhm. She was chatting with that person on the same day. I say shame on her. Yeah. She she did not have it in her to go to Mount Blanc on the 14th. 14th or 15th कभी भी जा सकती थी, like, to meet family and pay, say अरे condolences. 15th को चले जाती. She could have gone to the cremation. But no, Exactly. she had all the time अपने अपने फैमिली वालों के साथ मॉर्चरी जाने का उसका टाइम था उसके पास. लेकिन सुशांत की फैमिली को मिलने का, लास्ट राइट्स पे जाने का उसके पास टाइम नहीं. बिल्कुल. And we know it why. We know the reason. Yeah. If And she anybody only, wants to know about her, please refer to the charge sheet filed by NCB. It clearly states that she's part of drug syndicate, including her brother and the rest of the accused. They are total 35 accused, which Sachin Robot has taken out the entire charge sheet, I think, I believe. And hello, yeah. Sachin. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shri Ram. Hello Sachin. Jai Shri Ram. नमस्कार Har Har. सबको, जय श्री राम, हर हर महादेव. इट्स रियली ग्रेट सिमरन जी कि आप प्रोफेसर जी का जर्नी ले रही है. तो मैं प्रोफेसर जी से एक छोटा सवाल पूछता हूँ. प्रोफेसर जी, विच यूट्यूब चैनल वेर यू पार्ट ऑफ इनिशियली, द फर्स्ट यूट्यूब चैनल एज अ पार्टिसिपेंट इन सुशांत सिंह राजपूत मूवमेंट? विच यूट्यूब चैनल? The initially when I came on in this movement, I visited Vibhur Anand's channel because when I came in this, I I saw this man talking about the alive theory, and I wanted to question him that how are you saying what you are saying? So I went to counter him, and I still remember some 4 or 5 times I have gone to his channel on his YouTube and asked him a lot of questions regarding them, but they had no answers. They and their kitty gang never answered me. Whether it's on Alive, whether it's on Priyanka Singh ji, जब विभुर आनंद ने ये कहा था कि he along with the CBI is filing an FIR on Priyanka ji. So I was like, यार ये तो मतलब protocols में आता ही नहीं है. So how is he saying that? बट वो अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ था और उसके वो किट्टी पार्टी वाले मेंबर्स वहां पर साथ में बैठे रहते थे. बस वो सारा दिन उनका यही भजन चलता रहता था. तो And look, प्रोफेसर जी, मैं इसका निचोड़ निकालूं तो नॉर्मली सभी लोग सारे यूट्यूब चैनल्स में जाते हैं, जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो विभोर के पास जाते हैं, जैसे सेंथिल जी ने किया था. लेकिन आपका जर्नी स्टार्ट ही विभोर आनंद से हुआ था. नहीं नहीं, मेरा मेरा जर्नी स्टार्ट इसलिए हुआ था बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैं यूट्यूब मैं जब ट्विटर पे आया तो दैट टाइम देयर वर लॉट ऑफ पीपल पुटिंग लॉट ऑफ स्मॉल वीडियोस, लॉट ऑफ लिंक्स. सो आई यूज्ड टू वंडर, आई सेड यार ये इंसान कौन है. आई मीन एक तो KAUN कौन है और बाद में CON कौन है. सो आई वाज लाइक यार ये आदमी क्या कह रहा है. एंड आई वाज रियली वेरी अपसेट व्हेन ही केम आउट विद द लाइव नैरेटिव कि भाई आप लोग तो ऐसी ही बात कर रहे हो, सुशांत तो जिंदा है. वो भाई भाई करके कहता था, भाई का मुझे फोन आया, भाई के साथ आज मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ. आई वाज लाइक यार ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहा है. एंड देयर आर इनोसेंट SSRians who are getting fooled by him. So that was the reason why I said यार यहाँ पर क्या मतलब, how do I actually go here. See, very interestingly, if you look at Vibhur Anand's journey prior to his jail visit, he was on the right track. He was talking about SSR case. He was fighting absolutely straight. But ever since
he went to jail and came back, the entire narrative changed. And I used to wonder, I said, isko ho kya gaya? Ye pagal ho gaya kya? So most of the people took a back step when he came with his alive narrative. And that is exactly. And then I still remember there are other channels also which I went. I went to Sandeep Bhai's channel, and I went to another Amit Sarkar hai, AS Media. He also invited me. तो मैं वहां पर भी गया, उनसे भी बात करी मैंने. So that's how it started. मैं प्रोफेसर भाई अगर एक if I happen to take interview और जर्नी ऑफ विभोर आनंद इन सुशांत सिंह राजपूत मोमेंट, तो मैं भी उसको एक सवाल पूछूंगा. विभोर आनंद जी, which was the first YouTube platform where you gave your first live interview in SSR moment? तो विभोर आनंद का क्या जवाब आएगा? What do you think? I think मेरे को इसका आंसर मालूम है. If I am not wrong, please correct me, Sachin. I think Vibhor Anand went to Varun's YouTube. Am I right? Yes, yes. 100 out of 100, Professor. Yeah, and then I think after that he went to Sandeep Phokar's channel. वहाँ पे Yes, उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था सबने. फोगाट ने absolutely. बहुत अच्छे से किया था. It was so good. This is exactly what I am saying, guys. That initially, when this guy Vibhor comes and started this in his journey in this movement, he was going on the right track, Hmm. and he got all the love and respect from everybody. बट जैसे ही वो उसकी जेल यात्रा जो भी यात्रा थी वो खत्म हुई, उसके बाद he changed completely. And Hmm. that is disrespecting people who gave you that respect. That is disrespecting the SSR family and Sushant Singh Rajput himself. And that was his downfall in this movement, if you ask me. बिल्कुल. प्रोफेसर भाई, डाउनफॉल उसका नहीं है, डाउनफॉल हम लोगों का ही है. बिकॉज वो जो करने आया था वो करके चला गया. पैसे कमाना था, पब्लिसिटी कमाना था, वो सब करके चला गया. अब देखो वो ही हैज जॉइंट फिल्म प्रोडक्शन नो, बॉलीवुड ज्वाइन कर चुका है और बॉलीवुड के मूवीज बना रहा है अभी. वो तो ही विल देखो स्टार्ट है. फ्रॉम भोजपुरी मूवीज, भोजपुरी टू Yeah, बॉलीवुड जाए. yeah, a lot of people actually messaged me and told me about what he's doing right now. I won't like to comment on his personal life, what he does in his personal life. मैंने लोगों को हमेशा ये बोला है, लाइफ में भी और स्पेसिस पे भी, that guys, there is no shortcut in life. If you have to earn, you have to do it on yourself. Nobody is going to give you वो थाली में सजा के कोई देगा नहीं. Even if you choose the path of shortcut in life, it will be very short. You must देखो, कोई भी धोखेबाजी से पैसा कमाता है ना, that doesn't last forever. That has a very limited time. आप जो भी करो, आप चाहे सड़क पे मूंगफली बेचो, जूस बेचो, कुछ भी करो, वो आपकी मेहनत का पैसा होगा. You will be proud of yourself कि यार चलो, you know, I'm doing something Hmm. and this is my own, rather than, you know, scamming people and living and making it your bread and butter. This is going to be short-lived, shortcut, which लेकिन always भाई, people will get. ऐसे ही लोग बॉलीवुड में क्यों जाते हैं? ऐसे ही लोगों को बॉलीवुड में ही क्यों एंट्री मिलती है? सुशांत जैसे सच्चे मेहनती लोगों को का मर्डर किया जाता है, और ऐसे फ्रॉड करने वाले, ऐसे डबल गेम खेलने वाले, ऐसे बाकी स्कैम्स में इन्वॉल्व होने वालों को रेड कार्पेट वेलकम किया जाता है ऐसे इंडस्ट्री में. मतलब ये प्रूव हो गया कि ये इंडस्ट्री में जो भी कुछ चलता है वो सब गलत ही चलता है, और 2 नंबर का पैसा लगा हुआ है इस सारे इंडस्ट्री में. जो पैसा भी लगता है वो सारा 2 नंबर का पैसा है.
जेन्युइन हार्ड वर्किंग मनी नहीं है इसमें, मेहनत का पैसा नहीं लगता है इसमें, इसमें सिर्फ 2 नंबर का पैसा ही लगता है. डोंट यू एग्री? Yeah. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. और वहां पर कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ गिनी खन्ना जी हैं. शी इज सेइंग एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद हर आल्सो, दैट 2 नंबर का पैसा प्लस नेपोटिज्म. Nepotism. नेपोटिज्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, एंड दैट इज व्हाई Hmm. वी आर अगेंस्ट दिस बॉलीवुड कल्चर. ये ड्रग्स का कल्चर जो उन्होंने है, ये लोगों को एडिक्ट बना देते हैं. कि देखिए कितने स्ट्रिंग ऑपरेशन हमने देखे हैं. ट्विटर पे भी कितनी बार वीडियोस पोस्ट करी हैं. यूट्यूब पे आप देख लीजिए, इनसाइडर ऑफ बॉलीवुड, कैसे बताते हैं वो कि नए लोगों के साथ वो क्या करते हैं. ये नशे की आदत उनको में डाल देते हैं और उसके बाद अपना काम करवाते हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन बॉलीवुड राइट नाउ. नेपोटिज्म, ड्रग्स कल्चर, एक्सप्लॉयटेशन. इसके अलावा और क्या हो रहा है. Hmm. This is exactly how they cornered Sushant Singh Rajput. This is exactly how they tried their best to bring down Sushant in the Me Too movement. I sometimes hope, Simran ji and Sachin, that ऐसी मूवमेंट अगर मी टू के टाइम पे चली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता. Absolutely. Actually, there were many incident, Professor. Yeah, there were many times जब हम सब ने मिस किया है. उन्होंने hints दिए हैं कई सारे. Like there was a hint in on Instagram. One of his fan wrote कि मैं movie नहीं देखूंगी because you dying again. I think that about केदारनाथ के ऊपर थी वो that movie. And he said नहीं 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 आप प्लीज जाएं और देखें मेरी मूवी, बिकॉज अगर आप नहीं देखेंगे तो ये मुझे बॉलीवुड से निकाल देंगे, यहाँ से निकाल देंगे. आई डोंट हैव एनी गॉडफादर एंड यू गाइस आर माय गॉडफादर. तो he he did give us some indication, he did give us some kind of like क्या कहते हैं उसे कि कुछ जैसे कहते हैं ना हिंट देना या कुछ बताने की कोशिश करना कि प्लीज मुझे बचा लो या मुझे संभालो. तो वो चीज हम लोगों ने मिस करी, हमें नहीं समझ में आई. हमें लगता था अरे ऐसे ही कह रहा है, ही सच अ ग्रेट एक्टर. बिकॉज आई यूज्ड टू फॉलो हिम राइट ऑन इंस्टाग्राम. मैं उसको फॉलो करती थी आफ्टर हिज मूवी धोनी. तो वहां पे मैं इसके पढ़ती थी बिकॉज ही इज द ओनली वन हु यूज्ड टू गिव reply to or response to his fan. और मैंने किसी को इतना नहीं देखा, लेकिन he was like regular जो reply करते थे. तो वहां मैंने ये पढ़ा था. And I really wanted to say something, I really wanted to like write, but I don't know, somehow I just stopped myself. मैंने कहा नहीं, क्या लिखना उसको. He's a great actor, he's a great person, he know, and I don't need to tell him that. I wish I would have said that to him. I regret that so badly, so badly. That's given me goosebump कि यार मतलब सिमरन तुम्हारा एक वो sentence कि you are a great person, you are a great actor, तुम्हें किसी godfather की जरूरत नहीं है, would have um, boost him up more, like उनको मतलब एक और कॉन्फिडेंस आ जाता. कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर बहुत था, लेकिन मैं वर्ड नहीं ढूंढ पा रही हूँ. लेकिन व्हाट आई मीन कि मतलब वो उनको नहीं ये होता कि नहीं मैं मेरे साथ में पब्लिक है, मेरे साथ मेरी ऑडियंस है. doesn't make sense, like उनको इस बात का नहीं डर होता कि अगर पब्लिक नहीं जाएंगी तो मेरी मूवी नहीं चलेगी. तो See, he आई used to विश. he used to always respect his fans. He used to you know let me say this, that उसके लिए उसके जो fans थे वो उसके भगवान थे उसके लिए. And he used to communicate with his friends, with his fans, sorry, with his fans on regular basis. One of Yeah. his goals was to reply back uh, to all his fans. I remember एक लड़का था, उसका नाम शुभम था, शुभम. And Shubham wanted to donate something, but he said that he didn't have the resources. So this guy Sushant says कि शुभम, अब so
सोचने वाली बात है, एक फैन के लिए सुशांत करोड़ रुपया डोनेट कर रहा है कि यार शुभम ऐसा है, फ्रॉम योर साइड आई एम गोइंग टू डोनेट. दिस इज अ बिग थिंग. Shows how Absolutely. down to earth that person is. I mean, Yeah. it was his task, absolutely right, to respond 500 comments on social media in a day. Absolutely right. Yeah, we had And seen a video where while he was doing his exercise, he's listening his music, light music sunte the plus, and at the same time he used to reply or response to his fan on Instagram or Facebook wherever. वो देखा है हमने कि multitasking तो वो है ही, like he can do so many things at a time, so वो करते थे. एक क्वेश्चन बार बार यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. What is your take on sorry, can you put that message back again, please? Yeah, what is your take on the property going out on rent? So it's the same property, Mount Blanc. see, people need to understand one thing, that Sushant took that property on rent, somewhere around 4-4.5 lakh रुपए महीने का, Mm. that property. Okay, now that property has been investigated by the agencies and uh, probably cleared now to the owner. And अभी अगर आप, I think I remember the name, social media पे आया था, कोई merchant है, some merchant property dealer that has that came up with the advertisement of Mont Blanc कि भाई this property is on available on rent and now it has been given to somebody on rent as well. So it is bound to happen. वो तो मतलब जाना ही था ना, because Mm. it was not the property was not on Sushant's name. He was living Mm. there on rent. तो एक बार वो hand over हो गया, and if the agencies have cleared that building, then the owner is bound to give it on rent again. Mm. बिल्कुल बिल्कुल. I think as far as I remember and I understand, he only have one property in his name, which is with Ankita. जो कहाँ पे था वो मुझे याद नहीं है, पर अंकिता के साथ ही उसने जॉइंट प्रॉपर्टी ली थी. तो एक एक प्रॉपर्टी था लाइक अंकिता का और एक इसका, मतलब जॉइंट नेम था पर दो थे अलग अलग, ऐसा कुछ था. So You know, अब आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ कि क्या है कि while Sushant was in relationship with Ankita, they had taken two apartments, if I'm mm, not wrong. Both apartments were next to each other. However, mm, इन्होंने mhm, क्या करा कि दोनों अपार्टमेंट्स की बीच की जो दीवार है उसको तोड़वा दिया. So that mm, became one single apartment. Whereas okay, legally there are two apartments. mm, One was taken care of by Sushant himself, and the other one was taken care of by Ankita herself. mm, She has already posted that on social media. So अब वो प्रॉपर्टी कहाँ है, I have no idea. Probably, that's their personal thing between family and Ankita. But this is initially what had happened. mm. Yeah, thank you SSR for it's Malad, right? That's how we say Malad, Mumbai, जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी है जो अंकिता के साथ है. Yeah. Thank you SSR. Professor, I'm not sure. Sachin, sorry, before we go back to Professor, have you got any more further questions or anything else would you like to add, Sachin? मेरा लास्ट सवाल प्रोफेसर जी से है कि ऐसा हम लोगों को क्या करना चाहिए कि रूप कुमार शाह जी और बाकी आई विटनेसेस
का जल्द से जल्द सीबीआई में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, ऐसा हम लोगों को हमारी तरफ से हमको क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी तरफ से तो मैं कहता हूं कि every day we should question the agencies, put Roop Kumar Shah's statement, his recorded statement on social media, इसको हाइप करना चाहिए। और इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। We should ask the agencies to, the question that has his statement been recorded till now? If not, then why? Because unless and until you put pressure, यहाँ पर काम बनता नहीं है, मैंने ये देखा है। Hmm. So, and I think this guy plays a very important role here, very very important role. तो इसको हाईलाइट करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो if you ask me personally, there is no harm if there is a tagline or a hashtag on this particular subject, Roop Kumar Shah. There should be. See, how else are you going to put pressure for all those digital warriors, all those SSRians? How do they do that? They have only one power, and that power is to ask the agencies, tag the law ministers, HMO, PMO, DOPT, Supreme Court of India. I mean, these people, IPS Association, these people. And बार 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 वो बचपन में क्या होता था कि हम अपने पेरेंट्स से बार बार कहते थे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चॉकलेट लेके दो, मुझे चॉकलेट लेके दो। And they used to get fed up and say, okay, fine, yaar, le lo yaar. No, just giving you a small example. This is exactly why pressure is required. You keep on putting it. You do it again and again till you get an answer. And you will get an answer. But if you keep quiet, then things will either work slowly or they will be dead. Absolutely dead. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खुलासा किया है रूप कुमार शाह ने। दिस शुड नॉट get wasted at all. This is a very, very big opening in Sushant Singh Rajput case. और कोई भी केस, आप दूसरी तरफ देखिए डेवलपमेंट्स, दिशा सालियान के केस में देख लीजिए, दैट सिट हैज बीन फॉर्म्ड। अब उसको भी मेरे ख्याल महीना होने को आया है जब ये बात निकाली गई कि सिट फॉर्म होगी, अभी तक हुई नहीं है। बट जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, whenever that thing will happen, but at least announcement has been made and sit will be formed. So that is the good part. कब होती है, I don't know. But I am happy that there is now a special investigating team that will reopen Disha Salian case. And here in Sushant case, Roop Kumar Shah. So they play a very important role. So let's hope that his statement is gets recorded. सिमरन जी, आप म्यूट पे हो। Yeah, I realize that. Thank you. Any closing comment, Professor Ji, आपकी तरफ से? I would just say that everybody who came in this movement came with their own conscious mind. See, nobody invited anybody, right? सब ये सोच के आए हैं कि हम लोग यहाँ पर डट के मुकाबला करेंगे, सुशांत को न्याय दिलाएंगे। So stick by that. Think that this is your first day in the movement, and make sure that you stick here and finish that, cross that finishing line. So it's very important to stay united, stay together. If you don't like anybody, just ignore and move on. कोई बात नहीं. When the path is the same,
or later on, things will get sorted out and everybody will come together. Mm. But it's very important right now, very, very important that we stick together and fight for justice for Sushant Singh Rajput. So मैं सबको यही कहना चाहूंगा that keep doing what you're doing, what you think is best with within your capacity for Sushant, for Disha, and keep raising your voice because your voice, your everything related to Sushant or Disha matters a lot. आपको देख के और भी लोग आएंगे. So your doing matters. बस मुझे यही कहना था. बिल्कुल. थैंक यू सो मच प्रोफेसर जी, आपके अम, जो आपने मैसेज एसएसआरियंस के लिए दिया है, और आज आपसे बात करके आपकी जर्नी के बारे में जानकर बहुत बहुत मजा आया है. और सचिन, एनी एनी कमेंट फ्रॉम योर साइड? Nothing. The final thing is thank you for this interview and thank you, Professor Bai, for giving this interview and your journey in SSR moment. Uh, Thank you very much for having this live and until next time, thank you very much for giving me the invitation and the link. So सबको जय श्री राम, हर हर महादेव. And देखते हैं अभी future holds in SSR movement, how we should take this movement forward and how CBI records statement of Roop Kumar Shah ji and other possible eyewitnesses. अभी SIT का क्या होता है हम देखेंगे. दिशा सालियान का केस खुलना चाहिए. जैसे ही दिशा सालियान का केस खुलेगा वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के केस ऑटोमेटिकली खुल जाएगा. क्योंकि इफ यू नोटिस, सुशांत सिंह राजपूत के जो पिताजी है श्री के सिंह अंकल जी, उन्होंने ही बताया था कि ही इज वेरी हैप्पी विद द अनाउंसमेंट ऑफ SIT फॉर्मेशन. तो हमें अभी महाराष्ट्र के गवर्नमेंट और CBI और सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा प्रश्न पूछना पड़ेगा कि आखिरकार कब SIT का फॉर्म होगा और कब दिशा सालियान के केस में 302 फाइल होगा. उसके बाद ही मेरे हिसाब से सुशांत के केस में 302 फाइल होगा. थैंक यू. बिल्कुल. थैंक यू फॉर द इन्विटेशन. We have thank you Sachin. और इससे पहले कि ये end हो, अरे सचिन चले गए. We have a small surprise for Professor J. So stay tuned. Okay. When the going gets tough, only the tough gets going. Sushant Singh Rajput chose you for a reason. You are his voice, his heart, his soul. Together, united, we are stronger than ever. Let's go and get justice for Sushant Singh Rajput. I Thank you. hope Professor आपको पसंद आया होगा. That's very, very nice of Memeaa Salgaonkar to do that. And अच्छा तभी मुझसे okay. I got it. Thank you, Memeaa. Thank you, Simran Ji, for hosting, and Memeaa Salgaonkar for giving me the opportunity on her platform for speaking. And more sessions. I'll be looking forward for more sessions, more interactive sessions. In fact, it's always a Absolutely. pleasure to be among you guys talking about Sushant or Disha. Thank you from the bottom of my Thank heart. you. Thank you, Professor, आपका, for giving us your precious time. It was really nice talking to you today and to know more about, कि आपका इस movement में कैसे connection बना है. And I would also like to thanks all the audience of your listeners. Hey, thank you so much for joining us and thank you so much for listening to us. Please share this session and subscribe and like the session. Thank you so much, everybody. Have a good evening. Justice for Sushant Singh Rajput, Disha Salian, Jia Khan. Har Har Mahadev. Jai Shri Krishna.